A very good morning to everyone who's joined today's webinar on the India's growth story, future themes, and multi-bagger stocks. This being the International Women's Month, we would like to wish all the beautiful women in your lives, as well as the ones who have joined, the best wishes for the same. And as one may hear from me soon, the entire panel today that we have is of superwomen. The webinar will be based on the India growth story, the recent volatility that we have experienced in the markets, promising themes, and how to identify multi-bagger portfolios, and much, much more. Let me do a quick round of intro of all these lovely ladies. Nikita Choksi, who is the Chief Financial Officer at the organization. Now, she comes with a 21-year experience. She being a chartered accountant, and her experience that she carries is an operational and strategic experience in finance, accounting and taxation functions in manufacturing, consulting, media, and entertainment sector. We have Pallavi Jadhav, who heads the HR out here. She has done her master's in HR with a total 22 years of experience, with 17 being exclusively in HR business partnering, budgeting HR, policies, and process formulation and implementation. Parvati Rai, who is the Senior Vice President, Research Analyst. She carries more than 15 years of experience in financial research, investment research, strategy consulting, having worked across sectors with diverse client organizations like iBanks, PE firms, financial consultants, and the corporate finance teams of companies. Last is Mayuri Yadav, who is the Senior Vice President from the Informed Investor team. She has been her financial researcher herself with 20 years of experience in equity investments, infrastructure advisory, and investment banking. During this panel discussion, we will be speaking both in English and Hindi. Without wasting much time, let me get started with my first speaker who's Mayuri. Mayuri, here's the first question for you. Experts and policymakers are talking about India's growth story. What does Aruna have to think about it? Thank you, Pooja, so much for this wonderful introduction. And यहाँ आज सारे व्यूअर्स को जो आज हमारे साथ इस सुबह हमारे को ज्वाइन किए हैं उन सबको बहुत बड़ा धन्यवाद। जैसे कि आप सबको पता ही है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो विश्व भर में जो है बहुत बड़ी चर्चा का कारण बना हुआ है। तो नेक्स्ट 15 से 20 मिनटों में जो मैं कोशिश करूंगी कि विद फैक्ट्स एंड फिगर्स लेट अस डिस्कस कि ये एक केवल हाइप क्रिएट की जा रही है या फिर सच में इस स्टोरी में कुछ दम है। और मेरा ये भी मानना है कि हमें कभी भी अपने हिस्टोरिकल लेसन्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। खास करके बुरे लेसन्स को तो जरूर ध्यान कर लेना चाहिए, क्योंकि वही होते हैं जो हमें अपनी वीकनेसेस को दिखाते हैं, और जब हम उन पे वर्क करेंगे तो शायद हम फ्यूचर में अपने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस से कहीं ज्यादा कुछ अचीव कर पाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स हैं मेरे प्रेजेंटेशन की, ये मैंने कोलेट करी हैं। एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है एग्नेस मैडिसन, उनकी स्टडी के बेस पे ये 5-6 स्लाइड्स जो हैं उनकी स्टडी पे बेस्ड है, जहां उन्होंने स्टडी किया है फ्रॉम फर्स्ट एडी टू 2000 AD what has been the progress of the global economy. इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर इस स्लाइड में अगर आप देखें तो ईसा मसीह के जन्म से लेके 1000 AD तक जो है आप देख सकते हैं, दिस वाज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। उसकी पॉपुलेशन की कंट्रीब्यूशन 28% थी और जीडीपी कंट्रीब्यूशन 29% रही। एट द सेम टाइम चाइना की पॉपुलेशन मिक्स थी 22% और उसकी जीडीपी कंट्रीब्यूशन थी 23%। एक यूनिक फीचर अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो पॉपुलेशन मिक्स है और जो जीडीपी मिक्स है लगभग एक मिरर इमेज की तरह काम करें। जितनी पॉपुलेशन है जीडीपी मिक्स लगभग उतनी ही है, और ये सिलसिला जारी रहा नेक्स्ट 700 सालों के लिए भी। जब ये चार्ट जो है 1700 AD के लिए कंस्ट्रक्टेड है, जहां पे आप देख सकते हैं कि वैसे ही जो पॉपुलेशन मिक्स है लगभग उतनी ही जीडीपी मिक्स भी दिखाई देती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 18वीं और 19वीं सदी में, 18th और 19th सेंचुरी में, जब
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पिकअप करने लगा, वहां पे वी कैन सी दैट यूरोप और अमेरिका जो 1700 एडी तक जब कहीं नक्शे में उतना नजर नहीं आते थे, ना पॉपुलेशन साइड में ना कि जीडीपी साइड में, वो जो है अब लीड लेने लगते हैं, क्योंकि उनका फोकस कंप्लीटली इनोवेशंस पे था और प्रोडक्टिविटी गेन करने पे था, और क्लियरली वो उनके जीडीपी मिक्स का जो एक्सपांशन हुआ इस पीरियड में उसमें भी दिखाई पड़ता है। सैडली ये वही पीरियड है जब इन वेस्टर्न कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को फ्यूल करने के लिए अब हमें रिसोर्सेज की जरूरत है, तो क्यों ना उन कंट्रीज को कॉलोनाइज किया जाए जहां पे ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और उस लिस्ट में डेफिनेटली इंडिया शामिल था। तो यही वो समय है जब ब्रिटिशर्स ने आके इंडिया में ब्रिटिश राज एस्टैब्लिश किया, यहाँ कॉलोनीज एस्टैब्लिश करनी शुरू करी, और लगभग 200 साल तक उन्होंने हम पे राज किया, और इसका बहुत बड़ा खामियाजा हमें भुगतना पड़ा अगले 200-250 सालों तक, क्योंकि इस दौरान हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बिल्कुल पीछे छूट गए। जो 1870 एडी में जो हमारा जीडीपी मिक्स 25 और 30% हुआ करता था, वो घट के 12% हो गया, और क्योंकि हमारा पूरा फोकस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से में नहीं था, उस समय हमारा फोकस मतलब ब्रिटिश राज के एक्सप्लॉइटेशन के कारण जो हमारा इंडस्ट्रीज जो है हमारी सफर करने लगी, उसके कारण आप देख सकते हैं अराउंड हमारी इंडिपेंडेंस टोटल जीडीपी मिक्स घट के 4% रह जाता है ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी में। वो जो फर्स्ट स्लाइड में आपने 1000 एडी में जो आपने स्लाइड देखी थी, लगभग इनवर्स, अब जीडीपी तरफ में अगर आप देखें तो वो इनवर्स सी लगने लगी है, जहां पे यूरोप और अमेरिका ने जीडीपी कंट्रीब्यूशन इतना बढ़ा लिया बिकॉज उन्होंने वो इनोवेशंस और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे फोकस किया। इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि इससे पहले की जो इकोनॉमी थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले जो इकोनॉमी चलती थी, वो क्यों पॉपुलेशन मिक्स और जीडीपी मिक्स एक समान दिखती थी, क्योंकि जितने लोग हैं उतनी कंजम्पशन और उतनी ही आपकी जीडीपी हो सकती थी। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि आपने वैल्यू एडेड एक्टिविटीज शुरू करी बिकॉज ऑफ इनोवेशंस एंड प्रोडक्टिविटी गेन्स, तो जीडीपी ग्रोथ जो है आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से कहीं ज्यादा होने लग गई, और इसीलिए यूरोप और अमेरिका जो है इंडिया और चाइना से कहीं आगे निकल गए इस दौरान। अब ये जो सिलसिला है लगभग 2000 ईयर 2000 तक इंडिया में देखने के लिए मिला, जहां हमारा जीडीपी इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आप देखें तो केवल 5% तक ही पहुंचा, क्योंकि इस दौरान एक तो हमें आजादी जरूर मिली, लेकिन हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट हो गए। हमारी पॉलिसी, लाइसेंस राज, एमआरटीपीए, इन सब का जो है बहुत बुरा असर हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ पे डेफिनेटली पड़ा। फर्दर हम जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हम ब्रिटिश राज में हम सफर कर रहे थे, वो लेगेसी जो हमने कंटिन्यू रखी, इनफैक्ट बिकॉज ऑफ आवर पॉलिसीज, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज इन दिस पीरियड, बिकॉज ऑफ विच अगेन जीडीपी में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं देखने मिला। मगर स्टोरी इसके बाद चेंज होने लगी, बिकॉज ये वो समय था जहां पे डिजिटल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, विच वॉज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी एंड बाय ह्यूमन कैपिटल। एंड आपको पता ही है कि overall India is credited, in fact, to have one of the oldest universities in the world, Takshila. और हमारा contribution in the space of knowledge, science, mathematics, मुझको बताने की जरूरत भी नहीं है, from invention of zero, pi, trigonometry, surgery, astronomy, Ayurveda, you name any field, and our contribution, we have made a significant contribution in these fields. The point being कि जहां ह्यूमन कैपिटल की बात आई और जहां नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी की बात आई, वहां इंडिया ने फिर से पिकअप करना शुरू कर दिया। और ये क्लियरली विजिबल है जब आप वर्ल्ड की रैंकिंग देखते हैं। 2000 के बाद जो 1992 में जो हमारी रैंकिंग गिर के 15वें स्थान पे हो गई थी, वो धीरे धीरे 2002 के बाद आपको बढ़ती हुई दिखती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी सर्विसेज इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन है बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। और बढ़ते हुए अगर 2022 की बात करें, ये वो साल था जो हिस्ट्री में मार्क होगा, क्योंकि इस साल हमने यूनाइटेड किंगडम को, जिसने हमारे पे 200 साल राज किया, उसकी इकोनॉमी को पीछे छोड़ के हम 5वें स्थान पे पहुंच गए। एंड वी आर
well on our way to be the number 3rd economy in the world by 2027. अब 4 दशकों में हम देख सकते हैं, स्पेशली लास्ट के 1 दशक में अगर आप देखें, हमारी जो रैंकिंग है बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हुई है यहाँ पे। हमने 11वें स्थान से हम सीधा 5वें स्थान पे पहुंचे लास्ट 10 सालों में, राइट? अब क्या ये इसका मतलब ये है कि हम दुनिया में 5वें सबसे धनी लोग हो गए हैं इस दुनिया में? यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी, क्योंकि पर कैपिटा के बेसिस पे हमारी पर कैपिटा इनकम थी लगभग $2,500 और हमारा रैंकिंग वर्ल्ड में थी 141 आउट ऑफ 196 कंट्रीज। अब ये स्लाइड मैंने आपको इसीलिए दिखाया है क्योंकि आपको अगर याद होगा 76 इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देशवासियों से एक आग्रह किया था कि हमें जो है 5 प्रण लेने चाहिए या 5 प्रॉमिसेस करने चाहिए, जिसमें सबसे पहली था कि हमें प्रण लेना है कि हम भारत देश को एक विकसित या डेवलप नेशन बनाएंगे नेक्स्ट 25 सालों में। दूसरा था अपनी गुलामी की मानसिकता को हम हटाएंगे। तीसरा, हम अपनी लेगेसी, अपने रूट्स, अपने हेरिटेज पे गर्व करेंगे। चौथा था कि हम अपनी देश की एकता को और मजबूत करेंगे। और 5वां था कि एक नागरिक होने के नाते, एक सिटीजन होने के नाते हम अपनी भूमिका को अदा करेंगे भारत देश को एक डेवलप्ड, एक विकसित नेशन बनाने में नेक्स्ट 25 सालों के लिए। अब हमारी जीडीपी रैंकिंग अगर 5 है तो प्रधानमंत्री जी क्यों अभी भी ये बोल रहे हैं कि हम 25 सालों के बाद एक विकसित नेशन बनेंगे? उसका आंसर है इस स्लाइड में, जहां हमारी पर कैपिटा इनकम अभी भी $2,500 ही है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। और वर्ल्ड बैंक के डेफिनेशन के अनुसार एक विकसित नेशन या डेवलप नेशन के लिए कम से कम आपकी आज की थ्रेशोल्ड जो है वो कुछ लगभग $13,500 के करीब है। जब आप वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं तब एक डेवलप नेशन की कैटेगरी या हाई इनकम कंट्री के कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। एक डेवलप नेशन के डेफिनेशन में और भी बहुत सारी चीजें हैं, पर कैपिटा इनकम एक ही पार्ट है उसका, राइट? लेकिन $13,000 का मार्क आपको कम से कम क्रॉस करना चाहिए ताकि आप उस कैटेगरी में कंसिडर किए जा सके। तो अगर आप देखें आज की जो कंडीशंस हैं, $2,500 से लेके ये $3,000 का जो पर कैपिटा का जो गैप है, बट नेचुरल है, किसी के भी मन में ख्याल आएगा जो कंडीशंस आज दिखती हैं, क्या हम ये अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट 25 सालों में? वो भी ये कुछ बढ़ा चढ़ा के बोलने वाली बातें तो नहीं है, एक वोटर बैंक पॉलिटिक्स तो नहीं है। तो उसके लिए अगर हम देखें कि ये बातें केवल हम ही नहीं कर रहे हैं, विश्व भर में जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं और बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, IMF हो गया, मैकेंजी हो गई, सबको दे हैव द सेम ओपिनियन। इनफैक्ट द इकोनॉमिस्ट ने तो एक पूरी कवर स्टोरी करी है इंडियाज मूवमेंट करके। तो ये सडनली ऐसा क्या हो गया है कि केवल हम लोग इंटरनली ही नहीं देश में लेकिन विश्व भर में हम चर्चा का कारण बन गए हैं? और ऐसा क्या हुआ है एक्चुअली? तो मैं आपको बताऊं कि अचानक कुछ नहीं हुआ है। बेसिकली अभी तक चाइना ग्रोथ वाज डोमिनेटिंग, वर्ल्ड मीडिया का पूरा फोकस चाइना पे था, और इंडिया जो कि कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही थी, फोकस उनका उस पे नहीं था। अगर आप देखिए आजादी से लेके आज तक हमारी इकोनॉमी, जीडीपी जो है, नॉमिनल जीडीपी, वो 10,000 करोड़ हुआ करती थी, वो आज 273 लाख करोड़ हो गई है, 2,700 गुना बढ़ी है, जो कैगर टर्म्स में लगभग 12% है। ये किसी भी मापदंड से, किसी भी मेजर से जो ये छोटी अचीवमेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि आज चाइना स्लो डाउन हो रही है तो सडनली सबको रियलाइज हो रहा है कि इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट। नो, इंडिया हैज बिन द ब्राइट स्पॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। दे हैव नोटिस्ड इट नाउ, और मे बी दे आर मेकिंग दैट ऑब्जर्वेशन नाउ, probably.
अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि ये $13,000 ये अचीव करने के लिए क्या हम ये एक क्या मुमकिन टारगेट है? इज इट फीजिबल टू बिगिन विद? तो उसका आंसर ये है कि वो अचीव करने के लिए जो अभी तक की आपकी ग्रोथ रेट रही है, आपको केवल वो रेप्लिकेट करनी है आगे आने वाले सालों में। बट नेचुरली द नेक्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि वो 12% कंटिन्यूसली ग्रो करने के लिए क्या हमारे पास वो ट्रिगर्स अवेलेबल हैं, क्या हमारे पास वो ड्राइवर्स अवेलेबल हैं इन आवर इकोनॉमी और नॉट? तो लेट मी टेक यू थ्रू द की 5 points that we believe will certainly make has a potential to make India a developed nation. In fact, जो हम 12% की भी जो बात कर रहे हैं, शायद इन फैक्टर्स के कारण ग्रोथ उससे ज्यादा भी हो सकती है, इतना पोटेंशियल है इंडिया में। तो द की फैक्टर्स आर ऑफ कोर्स हमारी जनसंख्या, हमारी पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक्स। Second, the movement from low value added activity in the economy to high value added activities. Third is the rise of the middle class in India. Fourth is the digital revolution, and fifth is the physical infrastructure. और ये सारी चीजें होने के बावजूद भी आपकी स्टोरी जो है बिगड़ सकती है अगर गवर्नमेंट के फाइनेंसेस सही से ना चले। तो 6th point definitely is about the government's finances. Yes, India will continue to remain the most populous nation in the world. हम लोग की जनसंख्या इनफैक्ट 2023 में अनुमान है कि हम चाइना को भी से भी नंबर 1 पोजीशन ले लेंगे इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट पॉपुलस नेशन के खिताब के लिए। लेकिन हमारी स्ट्रेंथ क्या है? वो है कि मतलब जो मीनिंगफुल इकोनॉमीज है उनमें से अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है। आज हमारी मीडियन एज, एक एवरेज एज ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है वो 30.7 इयर्स है, जो कि 2031 में 34 लगभग 33.6 इयर्स हो जाएगी, राइट? ये जो खिताब है यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड का, ये ऐसा इकोनॉमिस्ट का अंदाजा है कि ये नेक्स्ट 40-45 साल तक ये खिताब हमारे पास रहने वाला है। इमेजिन, एंड इतने यंग नेशन का मतलब क्या है? जितने यंग लोग उतने नए, उतनी ही जो है आपकी कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन, उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो वो नेचुरली माइग्रेट करेंगे कि वर्किंग एज पॉपुलेशन में। जो आज अगर आप देखें हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन की टोटल 95 करोड़ लोग जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं और चाइना के 98.6 करोड़ लोग हैं, जो 2031 में बढ़ के 105 करोड़ हो जाएंगे। सो यू गेट इट, लाइक जितने यंग लोग हैं उसका मतलब है उतना ज्यादा अर्निंग पोटेंशियल, जितने ज्यादा लोग वर्कफोर्स में आएंगे उतने ज्यादा हाथ, उतने ज्यादा कमाई और उतनी ज्यादा जीडीपी। लेकिन ये इक्वेशन इतनी सिंपल भी नहीं चलती है। जैसे कि हमने पहले देखा था 1870 एडी से पहले कि जितनी पॉपुलेशन थी उतनी ही जीडीपी बन रही थी, क्योंकि वैल्यू एडिशन नहीं हो रही थी इकोनॉमी में। लेकिन जैसे ही वैल्यू एडिशन होने लगी, जीडीपी ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ से कहीं ज्यादा आने लग गई। और इंडिया को अगर अपनी जीडीपी को पॉपुलेशन ग्रोथ से ज्यादा रखना है तो हमें भी वो वैल्यू एडेड एक्टिविटीज पे फोकस करना होगा ग्रोथ के लिए। तो ये जो नेक्स्ट चार्ट है, दिस शोज कि हमारी वैल्यू एडेड एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ आवर जीडीपी वैल्यू एडिशन की बेसिस पे अगर हम देखें तो उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी में वो एक्टिविटीज आती हैं जहां पे आप नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते हैं, जो आपने बनाया सीधा सीधा वैसा का वैसा आपने बेचा। आपने कोई से कॉटन उगाया, कॉटन को सीधा का सीधा जाके बाजार में बेचा, ये आपने एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करी और वो प्राइमरी एक्टिविटी है। जैसे ही आपने इस कॉटन को प्रोसेस किया और एक टेक्सटाइल बनाया तो आपने मैन्युफैक्चरिंग करी और वैल्यू एड करी, तो वो आपकी मैन्युफैक्चरिंग और सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। और जैसे ही आपने इस टेक्सटाइल को यूज करके आपने एक फर्निशिंग बिजनेस शुरू कर लिया, इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस शुरू कर लिया, तो आपने एक सर्विस प्रोवाइड करने लगी, वो टर्शरी एक्टिविटी हो गई। तो वैल्यू प्रोग्रेशन में प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से टर्शरी का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इस चार्ट में अगर आप देखें, जो एग्रीकल्चरल का जो कंट्रीब्यूशन था वो 53% हुआ करता था अराउंड आवर फ्रीडम, वो घट के हो गया है 19% टुडे। लेकिन सर्विस की जो कंट्रीब्यूशन है 39% से लेके 61% पहुंच गई है। तो सर्विसेज साइड में तो
हमने बहुत अच्छा किया है। जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि हम जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में काफी पीछे रह गए, तो मैन्युफैक्चरिंग में उसका इम्पैक्ट अभी भी दिखता है, जो एक ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखती है। मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रीन लाइन है वो 15%, अराउंड 15% पे आप देख सकते हैं वो टिकी हुई है। तो जो पॉलिसीज और हमारे जो जो पॉलिसी मेकर्स है, उनका फोकस ये होना चाहिए कि हम जो सर्विसेज में कर रहे हैं वो तो हम कंटिन्यू रखें, लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग को भी उतना ही बल दें, क्योंकि वहां पे जो है वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होनी चाहिए। स्पेशली बिकॉज अगर आप जो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी बाय सेगमेंट्स देखें और जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है वो देखें, तो अभी भी 47% ऑफ आर वर्किंग पॉपुलेशन इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी विच इज अ लो वैल्यू एड एक्टिविटी। सर्विसेज में चीजें फिर भी सही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग साइड में अभी भी बहुत काम करना बचा है। तो ये जो 47% जो एम्प्लॉयमेंट मिक्स है एग्री का, ये शिफ्ट होना पड़ेगा सर्विसेज साइड में और मैन्युफैक्चरिंग साइड में, तभी जाके जो हम जीडीपी ग्रोथ को हाई ग्रोथ को मेंटेन कर पाएंगे। और ये चीजें जो है हमारे पॉलिसी मेकर्स बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इन्हें इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने बहुत बार सुना होगा मेक इन इंडिया, एंड आत्मनिर्भर भारत और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। ये सारी स्कीम्स क्यों अनाउंस करी जा रही हैं? इट इज टू इंप्रूव द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द जीडीपी। अगर केवल प्रोडक्शन इंसेंटिव स्कीम की ही बात करूं तो इसमें 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट के करी जाएगी नेक्स्ट 5 सालों में, और इससे पोटेंशियल है 6 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने का। सो ऑब्वियसली पॉलिसी मेकर्स अंडरस्टैंड इट, एंड देयरफॉर ये सारी पॉलिसीज जो है इस समय पे जो इंप्लीमेंट करी जा रही हैं, अनाउंस करी जा रही हैं। अब जैसे ही आपकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो हाई वैल्यू एडेड एक्टिविटीज में एम्प्लॉयड हो जाएगी, ऑब्वियसली देयर विल बी एन इनकम माइग्रेशन। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं वो जो स्ट्रगलर्स और जो नेक्स्ट बिलियन वाली कैटेगरी है, जो 2019 में 22% थी, वो घट के आधी हो जा रही है 11% पे, और नेक्स्ट बिलियन 45% से 40%। और ये माइग्रेशन हो रहा है अपवर्ड्स टुवर्ड्स एस्पायरर्स एंड एफ्लुएंट क्लास, जो कि 5 लाख से 20 लाख इनकम के हाउस होल्ड हैं। ये पॉपुलेशन नहीं है, ये हाउस होल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जो हाउस होल्ड 5 लाख से 20 लाख के बीच में फॉल करते हैं वो एस्पायरर्स और एफ्लुएंट है, और यही कहलाता है द मिडिल क्लास और मध्यम वर्ग। और किसी भी कंट्री के लिए उसका मिडिल क्लास का ग्रो करना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू व्हाई। अगर आप देखें जो स्ट्रगलर्स और नेक्स्ट बिलियन वाली कैटेगरी है, ये पे चेक टू पे चेक डेली वेजेस पे सर्वाइव करते हैं, ये सेव नहीं कर पाते हैं क्योंकि इनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं है। लेकिन मिडिल क्लास जो 5 लाख से 20 लाख वाली कैटेगरी है, यही वो लोग हैं जो अपनी सेविंग्स, जो इनकम से अपनी सेविंग्स करते हैं, इन सेविंग्स को अपने हायर एजुकेशन या कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। जितनी इनकम इस कैटेगरी की बढ़ेगी उतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा। सो क्लियरली मध्यम वर्ग या मिडिल क्लास का रोबस्ट होना किसी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यही तबका है जो कि एक नेशन बिल्डर का काम करता है। अगर आप अमेरिका की हिस्ट्री भी निकाल के देखें तो मिडिल क्लास हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसीलिए ये चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एफ्लुएंट एस्पायरर्स की बात करें तो जो 29% इनका मिक्स है दोनों का मिला के 2019 में बढ़कर 42% होने वाला है, मतलब कि 6 करोड़ हाउस होल्ड ऐड होने वाले हैं नेक्स्ट 10 सालों में इस कैटेगरी में। और यही वो कैटेगरी है जो आपके कंजम्पशन ग्रोथ को ड्राइव करेगा, आपके लिए टैक्स जनरेट करेगा इकोनॉमी के लिए, और सेविंग्स करेगा जो कि फर्दर फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट होती है। अब आपके पास आपने अपने लोगों को अच्छी नौकरियां दे दी, बिजनेसेस दे दिए, लेकिन और उनकी इनकम भी बढ़ गई, मगर वो इनकम का वो करेंगे क्या जब तक कि वो उसको स्पेंड नहीं कर पाए। और स्पेंड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कनेक्टिविटी, बोथ डिजिटल एज वेल एज फिजिकल। और डिजिटल कनेक्टिविटी के फ्रंट में ये इतना इंप्रेसिव डेटा है, आई डोंट थिंक किसी और कंट्री में आप ये डेटा देख सकते हैं।
अगर आप देखें 2016 में हमारे स्मार्टफोन पेनिट्रेशन वाज एट 24%. This has increased to 68% in 2022. In a matter of 6 years, 24% to 68%. 30 करोड़ लोगों से 93 करोड़ लोग आज स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं 6 सालों के अंदर. The pace at which this has happened is commendable. और ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है? क्योंकि 2017 में जियो लॉन्च हुई थी, और उसके साथ अगर राइट हैंड साइड वाला अगर ग्राफ देखें, वो जो रेड में जो नंबर्स लिखे हुए हैं, आप देखें वो कैसे फॉल हुए. वो है डेटा का कॉस्ट, और जैसे ही डेटा का कॉस्ट ड्रॉप हुआ, उस साल से आप देखिए डिजिटल अडॉप्शन कैसे शूट अप किया है. ये डिजिटल अडॉप्शन जो है रेवोल्यूशनरी है. ये हमारी इकोनॉमी में फंडामेंटल चेंजेस ला रहा है. हाँ, इसका इम्पैक्ट जो है आपको समझते हुए गवर्नमेंट ने एक और मास्टर स्ट्रोक किया. जहां आपने डिजिटल अडॉप्शन शुरू हुआ, गवर्नमेंट ने लॉन्च करी डिजिटल आइडेंटिटी का थ्रू आधार एक इनिशिएटिव. आज 129 करोड़ इंडियंस के पास एक डिजिटल आइडेंटिटी, विच इज 94% ऑफ योर पॉपुलेशन. आई डोंट थिंक एनी अदर डेवलप्ड नेशन आल्सो कैन क्लेम दिस. अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जैसे ही आपने एक डिजिटल आइडेंटिटी बनाई और उसको स्मार्टफोन और आपके बैंक अकाउंट से लिंक कर दी, आज उसका बेनिफिट आप कोविड टाइम पे जरूर देख पाए होंगे, जहां आपको वैक्सीनेशन के लिए कोई फिजिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा था. एवरी टाइम यू टुक अ वैक्सीनेशन, अ मैसेज यूज्ड टू कम, यू कुड डाउनलोड द डॉक्यूमेंट ऑनलाइन. कौन सा बैच लगा है, किसने लगाया, किस हॉस्पिटल में लगा है, डेट, इवन टाइम तक प्रिसाइज मेंशन था. ये कोई भी डेवलप इकोनॉमी ये इसको नहीं अचीव कर पाई. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, विच इज कॉल्ड जैम, विच इज जनधन अकाउंट, आधार एंड मोबाइल फोन का वो जो कनेक्ट कर दिया है. और ये एक फैक्टर बन गया है, इतना पावरफुल बेस क्रिएट हो गया है फाइनेंशियलाइजेशन और फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी के लिए. ये इतना बड़ा टॉपिक है कि आई डोंट थिंक इस 10-15 मिनट में मैं इसके साथ कोई जस्टिस कर सकती हूँ. इसके बारे में अगर और भी जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली वी कैन कनेक्ट फॉर अनदर सेशन. मगर ये आई कैन टेल यू, ये clearly, it is in fact it is a case study for the world. This is something the world should learn from India. अब कुछ दिनों पहले ही मेरी बात हो रही थी हमारे एमडी मिस्टर मनीष गोयल से. उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बात मुझे बोली जो मेरे दिमाग में रह गई कि मयूरी, आप डिजिटल कनेक्टिविटी तो दे दोगे ना, सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन अगर लास्ट माइल फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं होगी तो उसका फायदा ही क्या होगा? से फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल मैं टिम्बकटू जाऊं या जुमरीतलैया जाऊं, वहां की सीनरी के मैंने एक नाइस सेल्फी लेके और मैंने पोस्ट डाल दिया, अपलोड कर दी, वो पोस्ट वायरल भी हो गई. अब जिसने वायरल करी उसको बन किया कि मैं तो जाऊंगा टिम्बकटू या जुमरीतलैया. अब वो वहां ना कोई रोड है, ना पोर्ट है, ना कोई एयरपोर्ट है, तो कोई पहुंचेगा कैसे? या फिर वहां पे कुछ ऐसी अच्छी चीजें बन रही हैं जो मेरे को खरीदनी है, लेकिन वो मेरे तक आएंगी कैसे? जब तक कि वहां पे रोड्स ना हो या फिर उसकी फिजिकल कनेक्टिविटी पे काम ना किया जाए, राइट? जैसे कि आपकी बॉडी के लिए ब्लड वेसल्स जरूरी होती हैं कि आपके हर ऑर्गन तक जो है ब्लड पहुंचाया जाए, वैसे ही किसी देश के लिए उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज का जो नेटवर्क है, वो उन ब्लड वेसल्स का काम करता है जो देश के कोने कोने तक आपको गुड्स एंड सर्विसेज पहुंचा के देता है. गवर्नमेंट भी इसका इंपॉर्टेंस समझती है, इसीलिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में जो आप उसका मोमेंटम जो है आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं. इस बजट में बाय द वे कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज रेज्ड टू 10 लाख करोड़, 10 ट्रिलियन किया गया है, 37% ग्रोथ YOY, हाईएस्ट एवर. लास्ट 5 से 6 सालों का ही कैपिटल एक्सपेंडिचर का केगर हैज बीन 26%. इस पेस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर इससे पहले अपने देश में नहीं हुआ है. At the same time, we are launching schemes like a national infrastructure pipeline, Gati Shakti, and DFC. इतने सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए हुए हैं. उनका इम्प्लीमेंटेशन भी काफी स्ट्रांगली हो रहा है. एट द सेम टाइम जो कैपिटल चाहिए वो भी गवर्नमेंट जो है अवेलेबल करा रही है, एंड देयर आर डिफरेंट सोर्सेज दैट आर बीइंग टैप्ड टू फंड दीज प्रोजेक्ट्स.
हमने सारी बातें तो कर ली कि आपकी डेमोग्राफिक स्ट्रेंथ है, आपने उनको अच्छी जॉब्स बिजनेसेस में दे दिया, उनकी इनकम बढ़ गई, वो उन्होंने कंजम्पशन भी शुरू कर दी, राइट। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल ना कर पाए, मतलब कि अपनी रेवेन्यू को अपने एक्सपेंडिचर से ज्यादा ना रख पाए, तो ये सारी स्टोरी जो है अल्टीमेटली फेल हो जाएगी। क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाना है, आपको कोई सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपको जो भी करना है, आपको उसके लिए स्पेंडिंग करनी है, आपको उसके लिए एक्सपेंडिचर करना है। लेकिन अगर ये रेवेन्यू में कन्वर्ट ना हो पाया तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा। अगर आप देखिए 2020 तक जो है हमारे फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी 4.1 3.4 तक पहुंच गई थी। कोविड का ईयर अगर हम हटा दें 9, जिसके कारण फिस्कल डेफिसिट 9.2% तक गई, शूट अप करी। उसके बाद इस बजट में जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने, उन्होंने एक ग्लाइड पाथ दिया है फिस्कल डेफिसिट का, जो 2027 तक अगेन 4.5% तक जाएगा। अब क्या ये नंबर बहुत अग्रेसिव है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर आप हमारे लास्ट 10 से 11 साल की, इस साल की जो टैक्स कलेक्शन का डेटा ही देखें, इनफैक्ट गवर्नमेंट के एस्टिमेट से भी ज्यादा कलेक्शन हुई है इन टर्म्स ऑफ जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 24% ग्रो किए हैं, लगभग 24%, एंड इवन जीएसटी कलेक्शन हैज ग्रोन एट अ हेल्दी 25% YOY। अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहती है तो डेफिनेटली फिस्कल डेफिसिट के ये नंबर्स फीजिबल हैं। अब एक और चीज है जो हमें ध्यान देनी चाहिए व्हेन वी टॉक ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेस, इज इट्स डिपेंडेंस ऑन डेट। जितना ज्यादा हम लोन लेंगे, जितना ज्यादा डेट होगा, उतना ज्यादा, स्पेशली अगर हमने एक्सटर्नल डेट ले रखा है, तो ज्यादा आपकी इकोनॉमी पे स्ट्रेस आने लगेगा। आप किसी भी पैरामीटर को देख लें, चाहे गवर्नमेंट का डेट हो या प्राइवेट सेक्टर का डेट हो या फिर हाउस होल्ड का डेट हो, इंडिया वन ऑफ द लोएस्ट है इन टर्म्स ऑफ एनी, अगर आप उसको इमर्जिंग मार्केट से भी कंपेयर करेंगे, हमारे जो डेट पैरामीटर्स है हर कैटेगरी के लिए वन ऑफ द लोएस्ट है। ये एज इनहेरेंटली इंडियंस, ये हमारी फितरत में है सेविंग करना, हम वी आर नॉट कंफर्टेबल विद डेट, और वो हमारे नंबर्स में दिखता है, और ये हमारी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है एक्चुअली। बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड जो जिस कॉन्फिडेंस से जो हम कह सकते हैं कि ये नंबर्स अचीवेबल है, अगर ये डेट नंबर्स 2000% या 250% या 300% होते, तो कहीं कुछ डेट साइड में अगर कुछ गड़बड़ होती तो शायद ये नंबर्स अचीव करना मुश्किल हो पाता। So with that, I just would conclude by bringing you back to that first, the initial slide where, जहाँ हम बात कर रहे थे कि ये ग्रोथ मेंटेन करने के लिए हमें केवल 12% तक ग्रो करना है। तो डेमोग्राफिक एडवांटेज, आपकी मिडिल क्लास का राइज देखते हुए, प्राइमरी से सेकेंडरी टर्शियरी मूवमेंट देख के, डिजिटल फिजिकल कनेक्टिविटी का ग्रोथ देख के, क्या अभी भी आपको कोई शंका है या डाउट है कि ये पॉसिबल नहीं है? और अगर है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि हम लोग से जरूर ऑफलाइन कनेक्ट कीजिएगा। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अभी भी आपको क्यों इतनी स्केप्टिसिज्म है, क्योंकि ऑनेस्टली अकॉर्डिंग टू मी, हम लोग बहुत ही प्रिविलेज एक जनरेशन है जो कि अपनी कंट्री की इस ट्रेंड रिवर्सल को, इस पाथ टू ग्लोरी को हम विटनेस कर रहे हैं। इनफैक्ट वी आर कॉन्ट्रीब्यूटर्स टुवर्ड्स दिस जर्नी ऑफ आवर कंट्री, राइट? एंड बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी अगर आप बैठ के केवल देखते रहे और आपने इस समय में को यूटिलाइज नहीं किया और अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं करी, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी आज की तारीख में दुनिया में और कोई कंट्री शायद आपको ना दे जो आपके सामने आपकी कंट्री में अवेलेबल है। So with that, I would just end my session and I will just hand over the proceedings to Pooja. Many thanks, Mayur, for the wonderful insights that you shared. Parvati, here's the next question for you. 2022 was a very volatile year for the Indian stock markets, be it due to the external events or the rate hikes that we saw internally in the country. Will 2023 also be on similar lines? Very good afternoon to everyone. So when we talk of volatility, before we move
to how the market is experiencing the same. For the audience benefit, I would just like to explain that as a concept. So from the market perspective, we measure volatility through the VIX index. Now, this is a market index primarily which gauges the market sentiments for the next 30 days, especially around how the sentiments are with respect to people's risk appetite, stress levels, and those kinds of feelings. So this is a quick slide starting September 20. So the period from March 20 to prior to September, when we saw a major fall in the market, when the COVID had hit the country globally, not only India, but globally. The reason to remove that period out was because that was a very highly volatile period and the VIX index was just beyond the normal levels. But when we look at a period starting September 20, what we are saying is by then the markets had recovered most of the losses which was experienced in the March downfall of 20. Around 70 to 75% was already recovered. So from a period from September to say the current period of March, in this 2.5 year period, you can see the blue line. Now this is the VIX index and how it's moving, and the orange line is how the Nifty has performed vis-a-vis. So the circles actually denote or the exhibit where the period of this index has been very high. So when you look at especially the period from 1st of February, I mean mid of February to around April, this was the time when the index almost went to 28, indicating that the second wave of COVID had hit the country and the market sentiments were again quite weak. People were nervous, the risk appetite went down. So that is how for the next few months, people, I mean 100 days when the second wave of COVID almost lasted, people were not sure what's going to happen. And that's where the index remained high. But as soon as the COVID receded back, the index came down. And again, we saw a very big spike during this period was say at the end of April 2022, that was a period when it touched a 32. So another major global event happened, almost once in a century kind of a thing, where Russia invaded Ukraine. And now that was a geopolitical situation where the markets did not know what will happen, what ripple effects that will happen. And the index, the VIX index, which measures volatility, kind of went on upshot of almost 32. However, post that with different rate hikes, inflationary trends, if you look at the current levels, it's around 12. When we look at a February-March period, it's again very trending down and in a very range-bound levels. And if we were to look at the same index at a global level, I've just marked a couple of periods where we are mimicking the global trends. So again, when we look at, say, February to March, April 21, this was the COVID second wave hitting globally. And that's where it was high. Globally, again, if you see the March-April period when the Russia-Ukraine war was started, again, that's high. And now, even at a global level, when we look at S&P 500 and VIX, we see that it has kind of normalized. So what we understand here is overall in a longer duration, your volatility does tend to ease out. So what is it now? It's say. So this is a chart which give you, the market returns over a longer period of time. So if you look at a 10-year period, Nifty has given a CAGR returns of 12%. In a more 5-year period, it's 11%. And if you look at a more near-term period, which is 3%, it's 14%. So in spite of all the volatility that we see with different events happening, market has given almost a double-digit return. I mean, starting from 12, 13, 14, 15%. At a similar level, even the Nifty mid-cap has followed that trend. And if you see in the 3-year period, it's 22%, or a 10-year period, it's 14%. Small cap had slightly underperformed, except the 3-year period, if you look at a 5 and 10-year period during this tenure. So this is a quick, should I say, generally market, if you follow the cycles, it is said that the market follows an 8-year cycle. And that's the reason we have kind of mapped certain key events which have happened, say, starting 2013 to as of now. So what we're trying to say that in spite of the various, so on the left-hand side, you have a slightly less impactful events. On the right-hand side, you see events which had drastic impacts on the market, right from starting in 2013, where you saw taper tantrums, growth concerns, elections, while when we moved to 2015, it was a China crash. Moving later, I mean, you had the demon, GST introduction, and I mean, starting 20, I mean, as I said, it was COVID, lockdown, rising inflation,
two latest at 2022, where we saw the Russia-Ukraine war, rate hikes, and in turn ripple effects of inflation and recessionary trends. But in spite of all these events happening, what is good to see is that the markets have closed almost in double-digit returns or positive, barring some periods where you see low-digit returns like a 3% or a -4%, or more lately 2022, where we saw a 4% return. However, this also needs to be looked in from a perspective that when you get a 4% return in 2022, in spite of all these one-time events, it is on a high base where last 3 years, the market has given you a double-digit return. So a 12%, 15%, 24%. A similar case is seen in 2017, where you get a 29% return, and 2018 it's 4%. When you have a -4%, a year prior, you have seen a 31% return. So the whole idea here is you need to understand as an investor कि आपका investment horizon क्या है. Are you a long-term investor or are you a trader? Because if you're a trader, तो short term में volatility रहेगी. 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना अगर आप देखेंगे, stock specific देखेंगे, तो you will experience that volatility. But the moment if you look for a wealth creation beyond a 1 year period, 1 year, 2 year, or more preferably as we say a 3 to 5 year period, or even at a 10-year period, then this volatility eases out and the market will give you returns. चाहे वो 12%, 13%, 15% केस में है. And this is where we say you can also generate alpha, or we promise that alpha ki above the nifty returns of 12, 13, 15%. Another, you can achieve an alpha say overall of 20, 25% combined over the market returns when you have the right stocks in your portfolio, and that can be the expectation from the market. But then in the short period, this cannot be achieved. So yes, volatility plays a very important role if you're a trader or a short-term investor, but you should not be concerned with volatility in a market when you're looking from a longer duration or a horizon. And I think that's where I'd like to stop for now. Thanks, Parvati, for those insights. I have the next question as well for you. Which sectors and emerging themes are we liking at R&R? Okay. So now this is a very pertinent question. We always keep hearing this. So you see a list of sectors on your screen. So this list is just not come up. You need to understand here that being in the market, being in the research area, we go through, hundreds of reports. We regularly meet our corporates, do our road shows, meet management, also check the market pulse via various supply checks that we do on the ground. So when you do all that, you understand what is happening. So some of these themes mentioned here could be a more near-term or a mid-term theme. When I mentioned that, it's still a 2 year, 3 year period theme, or some of these could be a multi-decade theme, which means it could last for more than 5 years, 10 years, and be the structural story of growth for India. And that is where we want to be. So while these are more high-level themes, within these themes also you have various sub-pockets or growth elements which would be there. So possibly if you look at the 6th point, which is more around the China +1, recently also your Europe +1, Taiwan +1, and why we see this as a growth story for India, as you might have heard in Mayuri's presentation. What is happening is, say for China, why was China so dominant and attracted interest? So from 1990 to say 2010, in that 20-year period, manufacturing in China was at its peak, right? They were producing left, right, center. And that is where India is trying to be now, right? From government support through various manufacturing incentives, the PLI schemes that you're offering. True, if you notice in the last 1.5 years, even companies have started investing into their capex. So during the COVID period, which had taken a back seat by companies, they have now gone all out. And if you see companies within pharma, chemical, manufacturing sector, they are all setting up their capacities or expanding capacities, which will essentially be one of the driving factors for India's long-term growth, and possibly if you're present in some of these spaces. Another interesting theme here is e-mobility. So e-mobility, possibly on the face of it comes as e-scooters and e-vehicles. But let's look at it not only from that perspective, but across the value chain, how you can derive benefit if you are a part of it. So what I'm trying to say here is an auto ancillary company who could also be giving components to a e-scooter or an e-car will also benefit. A battery manufacturer, like when we talk of these lithium batteries and other kinds of batteries, who would also be supplying to some of these
mobility companies will stand to benefit. So the whole supply chain should be a part of evaluation, and not only at the front face of an e-mobility or the immediate first impact sector that comes to the mind. Another area where the government is making or good strides or is focusing is renewable energy. I mean, I don't need to kind of focus much on that. The recent budget also captured that green hydrogen, solar, where India is trending second because of the solar investments that we are making. So yes, this always remains a top priority, and being a part of this emerging sunrise sector is always good to be in. Coming to financialization of savings, this is one sector and theme that we actually like. The whole idea here is, especially just let's take a step back. Traditionally, when we look at our parents, when you asked of investments, they would always say FDs and PPFs and those kinds of investment vehicles. But when you talk to a Gen Z, millennials, or even in the middle pockets of the new emerging investors, they would talk more of mutual funds, REITs, stock markets, and investment infrastructure, and those kinds of alternative investments. So this is where we feel that financialization of savings is taking a forefront and will be a driving force, and one should be present in this space as well. Coming to emerging tech landscape, the tech landscape is everywhere. I mean, people only take it as a more technology company, but we should be looking at it more from a perspective of, say, internet of companies that we are facing, all these new generations of companies which are using technology to drive their growth. So now it could be across sector, it could be across space, and not limited to only the IT sector is something that one needs to understand and accordingly look for opportunities. Last but not the least is digitalization. Now, this is something that Mayuri again highlighted in her India growth story on how we are growing, right? She mentioned the linkages with Aadhaar, digitization, Jan Dhan accounts. All this was only possible because of the strides that we are taking. So what I'm trying to say here is any part or any company who is in that process of digitization, automation, and will look to reap the benefits of it is something that one should look to kind of keep it in their portfolios. So I think, yes, these are few of our top emerging themes and areas that we like in. Thanks, Parvati, for that. Just a small disclaimer that any stocks mentioned during the session are only used as examples and not to be considered as buy or sell recommendations by ResearchAndRanking. We would also appreciate our participants. If you have any questions, you can feel free to drop it in the chat box, and we will try answering as many as we can. Coming back to the next question, again, that comes to you, Parvati. How should we construct a multi-bagger stock portfolio? Okay. So kind of constructing a multi-bagger portfolio in this period, before we come to that multi-bagger portfolio construction, let's take a step back and understand how the market and its related sectors have moved, say, primarily in the 5 or 10 years that we are looking. So the data on the screen that I'm presently sharing shows you in the last 10 years, right, how the market has moved and the important sectors, I mean, how their performance has been. अगर हम ये देखें तो निफ्टी ने एक कैगर रिटर्न लास्ट 10 साल में 12% का दिया है, which is 3x returns. So during the same period, अगर हम निफ्टी 500 as a universe देखें तो लगभग, I mean, close to 250 stocks have given you 1x to 5x returns. Around 100 stocks have given you 5x to 10x, and another 50 have given you 10x to 20x kind of a return. So what we are trying to say here is, in this whole Nifty universe of 500 also, when a Nifty gave you 12% returns, there was a universe of, say, almost 150 stocks जो आपको 5x से 20x तक का return उन्होंने दिया है. So what we are trying to say here is, even if you're a part of this category of 150 stocks, right, and slightly more around the 20-50x, you can generate a decent alpha. But इसमें what we are trying to say here is, there are sectors which are above the Nifty. जब हम देखते हैं जो green में है, Nifty, IT, financial, जिन्होंने 10 साल में perform किया, and there are some sectors which perform slightly lesser than the Nifty.
So the idea is to be in sectors which have performed better than the Nifty in most part of your allocation. When you're doing a model portfolio or a creation, the idea is to be present or more tilted in your model portfolio stocks, which are in these high performing sectors with respect to the Nifty, so that you can get those alpha returns. So now coming to how do we create this portfolio? Yeah, so if you look at the right hand side, yeah, I have a bar chart. So before explaining the bar chart, we need to हमें ये समझने की बहुत जरूरत है कि how EPS growth plays a very important role in selecting a company. अगर EPS growth नहीं हुए तो so imagine in the last 10 years some of these blue chip and large chip companies like an Asian Paints, like a Bajaj Finance, Pidilites and these kinds, on how the kind of growth they have given at an EPS level. So when you're doing your quantitative analysis, one of the important factors is to understand जो आपका EPS है company का वो कैसे grow कर रहा है, how fast is it that compounding, and that will be a major contributor. So अगर हम बोल रहे हैं कि market में आपको 3x returns चाहिए, which translates to a 25% or a 4x to 30%, 32% plus, or a 5x or 38%. तो उसमें EPS का जो compounding CAGR growth होगा वो 20%, 24% और 28% रहेगा. So now this is a very important quantitative analysis that we do कि जो companies fast growing है at the bottom line, giving that kind of an EPS growth should be a part of your portfolio. Now the rest that we say, so while it is more of mathematics, quantitative driven, little bit of science is involved where we say that market also has its own macroeconomic drivers. It also re-rates certain sectors and industry, and that is around 5 to 10, 15% of a stock return or a sectorial return. So while you select a company which is fast growing on an EPS level or a growth level, market will also have its own factors or a driving reasons, and cumulative you get that alpha return that we are talking of. Now coming to how do you make a model portfolio which will give you that best returns. So what we are trying to say is ना ही हमें all growth stocks रखना है because that gets very risky when the markets go in a downturn, और ना ही हमें सारे blue chip या large cap stocks रखना है क्योंकि उससे क्या होगा वो आपको alpha returns कभी नहीं मिलेगा. You will just be kind of mimicking the nifty returns. So there has to be a very appropriate balance आपके risk appetite के हिसाब से, आपकी investing ability के हिसाब से, that we need to kind of understand. So we follow an ABC method of investing, which means A is an all-weather stock. These are your value stocks, primarily your large cap blue chip stocks, जो कि एक downward market में आपकी portfolio को balance lend करते हैं, stability lend करते हैं, and will ensure that your portfolio does not go beyond a particular level. In the interim, when you come to the other two aspects, जो आपका business momentum है या circle of opportunity है, so ये आपको help करता है एक alpha return generate करने में. So business momentum क्या है? Anything which is from a macro perspective, which is driving that industry or a stock. एक sectorial trend हो सकता है which could be impacting that stock. Any other major events like a government policy, right, which might, जैसे हमने बोला भी PLI schemes, right? Now this will help certain manufacturing companies, certain pharma companies. Now this is a trend, infrastructure investments जो company कर रहे हैं. This is a macro event which is happening in the near to medium term. And when you come to circle of opportunity, this is more stock specific. इसका मतलब है कोई stock में turnaround story है, कोई comeback story है, demerger event हो रहा है, जिसके वजह से it becomes an attractive investment opportunity and possibly an ability to give you a higher return than the market, and then that it becomes a part of the portfolio. So what we are trying to say here is, अगर आप एक आपके risk appetite के हिसाब से, depending on how conservative or how high risk investor you are, you should have a combination of an all-weather stock to the growth stocks in different percentages in your portfolio, and that should help you give the alpha returns that we talk of. Thanks, Parvati, for the wonderful insights. Moving to the next round of questions. Now, friends, I would like to bring in two of my more colleagues, that is Nikita Choksi and Pallavi Jadhav, into the discussion. Nikita, here's a question for you. What products does R&R offer? Good afternoon, everybody. So after gaining so much of knowledge in terms of numbers, I present to you our offerings, which are as follows. So as we all know, investing in stocks is not that easy, right?
So the first and foremost offering that we give to our valued customer is in terms of informed investor. This particular offering gives insights into whatever is happening in the market, be it on a daily basis, be it on a weekly basis, or even on a monthly basis. So there are videos which are shared on this platform, right? And everybody is free to take its help, because there are peculiar events which are happening in the market, and in today's busy life, it's people seldom find time to actually go through each and everything that is happening in the market, and at times which makes them feel uneasy that, okay, how is it going to impact my portfolio? So that's where informed investor, our product, pitches in and gives you insights into everything that is happening around the globe. The another thing that we offer is, I just read through a few questions which were there that are the participants were wanting to know that what is it that we offer in terms of small investments. So here is another product which is 5 and 5 in combo, wherein investable surplus up to 25 lakhs is taken care of. And in terms of offerings, of course, we help them build their portfolio with the idea of long-term wealth creation. Apart from that, I mean, I'm sure there are many people who would want to multiply their wealth from the existing surplus of, say, around 25 lakhs too. So that is where our another product, which is Dhanwan, comes into picture. There are certain allied services which are also there apart from portfolio creation for this kind of a product. And last but not the least is our 10 trillion opportunity, where we have offerings for our clients who have investable surplus, which is 1 crore onwards. So here we are to help you out, invest and create wealth. Thanks, Nikita, for sharing the wonderful insights of the various offerings that we have. My next question comes to Pallavi. Pallavi, you are from a non-financial background. Could you share some thoughts of what has been your learnings when it comes to investing? Hi, everyone. Basically, I come from a very middle-class family where we are always taught that, stay away from the share market. It's okay to invest in FD, having liquid cash, but stay away from the share market. And that is what I was taught, and that is what I continued doing till the time I joined R&R. This is the place where I joined during the COVID times. So I used to travel with a colleague of mine who was a senior person in sales. And I would listen to his conversations with his customers about long-term investment in equities and what are the benefits. And initially, I would just hear him out. And because I was from an IT background, so financial services, advisory was a new ball game for me. But after a few days, I started asking him questions as to why, what, how. And somehow he managed to convince me. And yes, I started investing in equities. But after a few months, the market crashed. And all my fears surfaced that, see, I knew that, stay away from the share market. And I stopped. That is when my dear friend and colleague Pooja came into the picture. And she took a session with me and my whole team, addressing our fears as to why you should not stop investing. And we had more than 100 questions for her as to how can you say that, keep investing when everything is going wrong. Everything is not really giving me those returns, what I was expecting. So she addressed each and every fear of ours in a very practical way. The first thing that she says that pandemic or no pandemic, market crash or no, people will never stop buying soap, toothpaste, cooking oil. These are some products which will always be bought and used. And the companies who are making these products, they will never go down just because the market is down. In fact, this is the best time for people who are investing in equities long term to start buying shares. So that this is the downtime, so buy, and when the market goes up again, it's like when you see those investments
giving fruits. So yes, I started investing again, and yes, I'm on my investing path again. Happy to hear that, Madhuri, from you. And clearly, it is a reason for us to believe that every downfall or every correction that we see in the markets, somewhere, instead of being fearful, you should become greedy as an investor and make the most out of it. Next question, I again come back to Nikita. She has been very good with numbers. Has this helped her when it comes to her investing journey? Sorry for that glitch. So as we have all seen, there are a lot of numbers floating around, which my colleague Parvati and Mayuri has shared with all. And I'm sure everybody has this thing in their mind that so many numbers, and how do we take care of it, right? So it's from a layman's perspective, I would just say one thing, that unless and until you're good at numbers, how is it that you would take a call on investments? So yes, indeed, it is important for everybody to understand numbers well. Of course, nobody is perfect in understanding numbers, but that's where we come to your rescue. That's the first thing. Second thing, to understand numbers and investing, there is also something that is needed, which is called as a little bit of interest and understanding of the economic scenario. So again, when we go to economic scenario, it comes out as numbers. So yes, numbers are essential to understand the investing journey. And even if you look at it, everybody's household budget, that is nothing else but numbers. So yes, it does help you to understand things better. And it has helped me in my investing journey as well. Thanks, Nikita, for that answer. Moving to the next question, Pallavi. When it comes to our HNI clients, can we also help them with investment advisory? As my colleague Nikita mentioned earlier regarding the retail offerings that we have, at R&R, we understand that HNIs have discerning needs. Hence, we have a niche offering called Dhanvan, which she spoke about, which is especially for those with a surplus of 25 lakhs and above. There are specific offerings that we give with Dhanvan. It offers a highly customized and concentrated portfolio of 20 to 25 stocks. Dhanvan customers also get dedicated support for the equity portfolio and hand-holding from an experienced portfolio manager. Dhanvan also ensures that you have a complete control over the deployment of your investable surplus. Mayuri, my next question is for you. Does R&R help me or maybe the bigger audience become an informed investor? Yeah, see now, especially because I'm part of this informed investor team. So let me just take some time to explain to you our offerings. अभी जितने लोग as viewers हमको join किए होंगे, broadly if I have to categorize, 3 तरीके के investors होंगे. एक तो जो अभी बिल्कुल investing journey शुरू कर रहे हैं, they are interested in knowing कैसे शुरू करी जाए, right? दूसरे कैटेगरी होंगे जिन्होंने इन्वेस्टिंग जर्नी तो शुरू कर ली है, लेकिन they are still in that experimental phase. They're trying to learn by hit and trial method that how this thing works. And the third category will be the ones who have been investing. They are very well versed with the investing concepts and they've been doing quite well for themselves. मगर उनके पास time नहीं है, इसीलिए they have come on a platform like ours, probably to associate with an advisor like R&R, right? ये जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी है वो मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करती होगी. जो थर्ड कैटेगरी है जहां पे यू आर वेल वर्स्ड इन्वेस्टर, मे बी बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम यू आर लुकिंग एट एसोसिएटिंग विद एन एडवाइजर, ये कैटेगरी बहुत छोटी होगी.
तो ये जो प्लेटफॉर्म इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर क्रिएट किया गया है, दिस इज एग्जैक्टली कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दीज फर्स्ट टू कैटेगरीज बेसिकली, जहां आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करें या फिर यू आर ट्राइंग टू डेवलप बेटर स्किल्स, इन्वेस्टिंग स्किल्स योरसेल्व्स. इसमें ओवरऑल फॉर अ न्यू इन्वेस्टर दिस प्लेटफॉर्म विल बी हेल्पफुल इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, कहाँ से मुझे शुरू करना है, स्टेप बाय स्टेप मुझे कोई बताए कि मेरी जर्नी कैसी रहेगी. For someone who has been investing but is trying to develop skills, there are various modules created that will help you become a more skilled investor. So overall जो हमारी ऑफरिंग है इस प्लेटफॉर्म पे, इसीलिए अगर आप देखें उसको हमने कुछ इस तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है. These are the 6 sections under which our offerings are made available to our subscribers. सबसे पहले है डेली न्यूज एनालिसिस, वीकली राउंड अप, स्पेशल इवेंट्स, इन्वेस्टर एजुकेशन सीरीज, देन प्रैक्टिकल नॉलेज सेशंस, एंड द लास्ट वन इज नॉन इन्वेस्टिंग रिलेटेड कंटेंट. यहाँ पे सबसे पहले बात करूं डेली न्यूज एनालिसिस को, the term we have coined for it is the DITM, daily insights that matter. यहाँ पे idea is to cut through all the clutter and noise in the markets, all the news and commentaries that keep getting bombarded, to declutter them and to understand what what is important for us in that on a daily basis. Similarly, the weekly roundups, we have termed it as the third umpire, is to keep all the investors up to date with all the events that have happened in the week gone by. Usually, as Nikita was telling you that, you are so tied up in your day-to-day lives. We from morning till night, we are busy with our jobs, with our families and other things. We don't get time to analyze news, what's happening around us. So these 2 sections primarily, अगर आप दिन में 5 मिनट निकाल सकें, तो it will kind of sum up what has happened, which is important for you as an investor, right? And weekly roundup will typically be a half-an-hour session or say over a weekend, Sunday subhe. Just make it a habit, if you can go through this half-an-hour session, which will summarize all the important things that have happened during the week with far more analysis. And like a third umpire, it will give you a clear indication whether इसमें क्या noise है और क्या आपके मतलब की चीज है. Basically, इस section का काम वो है. Then the third category is the special events. यहाँ पे we invite all experts, internal experts as well as external. जहाँ पे ये highly analytical sessions होते हैं, very informative. जो भी events हमारे साथ हो रहे हैं, अब जैसे yield curve, कल की न्यूज में कि इंडिया में yield curve reverse हो गया है. So now these complex events get discussed by experts where they give you clarity as to how you should view them as investors. Then the fourth category is investor education. ये वो category है जहां वो जो new investors हैं जो अपनी जर्नी शुरू कर रही हैं, उनके लिए बहुत relevant है. जहां we will teach you step by step कि आपके लिए investing journey के लिए क्या चीजें important है, क्या concepts important है. जैसे कि निकिता मैम ने बताया कि numbers important, तो उनमें क्या चीजें देखने की होती हैं. तो ये investor education वाला section new investors के लिए खासकर जरूरी होगा. फोर्थ कैटेगरी है प्रैक्टिकल नॉलेज सेशंस. यहाँ पे आपने समझ लिया कि इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है. जैसे पल्लवी बता रही थी कि उनको बहुत डर लगता था इक्विटी इन्वेस्टिंग से, लेकिन जब पूजा ने उन्हें बताया कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों आपको नहीं डरना चाहिए ऐसे मार्केट इवेंट से, तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा. लेकिन अगर आपको जब वो इन्वेस्टिंग जर्नी समझ में आ जाए, आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए, इसके लिए पहले के 4 सेक्शंस हैं. एक बार वो समझने के आ जाए, आप उसके बाद अपने स्किल्स डेवलप करना चाहोगे, जो कि सेकंड कैटेगरी ऑफ व्यूअर्स होंगे जो जर्नी तो शुरू कर चुके हैं लेकिन दे वांट टू बेटर देयर स्किल्स. सो यहाँ पे जो होगा केस स्टडी बेस्ड वर्कशॉप्स और कोर्सेज. बाय द वे वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लॉन्चिंग दिस फोर्थ कैटेगरी, तो वो डिजाइन फेज में है. वी विल बी सून बी लॉन्चिंग आवर वर्कशॉप्स एंड कोर्सेज जो कि आप अवेल कर पाएंगे टू होन योर स्किल्स एज एन इन्वेस्टर थ्रू प्रैक्टिकल
practical case study based approach. And the last category is non-investing related content. अब इतने heavy topics देख के, right from daily analysis to practical knowledge sessions, you may like to take some respite, from all these heavy duty topics. इसीलिए इस section का नाम ही हमने breather रखा है. It will cover some of the very engaging topics for you. So overall, ये आपके लिए sections है. I would really encourage कि ये हमारा app जाके download कीजिए. App both Android और iOS platform पे available है, and you can start consuming the content that is available under these 6 sections on our app. Thanks, Mayuri, for that. My next question. Investors in equities joining us today. What is the investable surplus that as a new investor should they be doing? Okay, thanks for the question, Pooja. But before I come to your question, there are a couple of live questions which I'd like to answer. So there is, what I'm trying to say is, since this question have a common format, so एक Mr. Ashok Dhingra जी का question है कि हम intraday trading पे advise करते हैं कि नहीं? तो नहीं, हम intraday trading पे advise नहीं करते हैं. We advise more from a longer term perspective, where minimum one of our products has still a 1-year time frame, जो MPO category में आता है. We are here to create wealth in a longer term time duration, जो कि some of my colleagues already discussed under different products. So yes, intraday is a category where we don't advise. We advise from a longer term perspective, जो wealth creation view से होता है. So bare minimum 1, 3, 5, 10-year period is something that you should be looking at. Again, he also had another question, and like him, there was a repeat that do we help in private placement at the pre-IPO stage? ये भी एक question आया है. So yes, in couple of categories under different products, we do help with private placement, and we do have private companies investment as well to ensure that these companies, when they unlock value, they go to the IPO stage and you get that kind of a return. So in select percentages of your part of your total portfolio, हम advise करते हैं investments into the pre-IPO stage companies, और ये service offering है हमारे पास. So he also had a question which Pooja just asked me कि investable amount एक new investor का क्या होना चाहिए. So coming back to the original question. So here, before we come to the investment surplus amount, let's understand कि आप किस type के investor हैं. आप एक Gen Z, new age millennial investor हैं, who is well informed, या just about to start the investment journey. आप एक middle aged person है, या एक आप retirement age पर हैं. So if you're in a retirement age, you should ensure that the first and foremost would be you should be able to have all your important expenses with respect to emergency medical, daily household and requirement running expenses meet होने के बाद ही जो surplus होगा वो आप invest करें. For anybody else, what we are saying is bare minimum. So I think Mr. Ashok ji ka question tha ki how can it be less than 5 lakhs? So yes, it can be less than 5 lakhs to start an investment journey, पर हम फिर भी बोलते हैं कि bare minimum 3 lakhs, 3 lakh का amount होना चाहिए, and you should be able to spare it to start with at least for more than a period of 1 year. 1 से 2 साल, preferably 3 साल रखें to get kind of that kind of a return, because एक short term period में आप उस तरह का return नहीं generate कर पाएंगे. So to start with, bare minimum 3 lakhs corpus होना चाहिए आपका. Depends on which product, basis your risk appetite, you can select with us. I think our counselors can reach out and you can touch base with them to understand more around that. Thanks, Pooja. Thanks, Bhavati. Mayuri, the next question is for you. We come across many investors who go about checking with us whether we should go about investing in one go, that is lump sum, or in the form of an SIP when it comes to investing. So actually, it really depends from investor to investor. If you are the investor who's actively involved in the whole process and has been monitoring and is well versed, जिनको monitor करने में कोई difficulty नहीं है, time कर सकते हैं market का, तो lump sum कीजिए. लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनके लिए मॉनिटरिंग करना, you don't have those skills, and especially मार्केट टाइमिंग को लेके इसमें आप उसमें आपके कोई स्किल्स नहीं है, तो SIP डेफिनेटली बेनिफिशियल होती है. एंड SIP
फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत देती है आपको, यू कैन स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट्स, कॉस्ट एवरेजिंग के बेनिफिट्स इसमें आपको मिल सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली इट विल गिव यू द डिसिप्लिन कि आपको हर महीने और जो भी आप फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे ना उसमें आपको उतना अमाउंट जो है वो आपका ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होता जाएगा। तो इसको आप एक डिसिप्लिन में आता है वो इन्वेस्टिंग को लेके, इसीलिए एसआईपीज जो है बेटर मोड है फॉर श्योर फॉर नॉर्मल इन्वेस्टर जो इतने इन्वॉल्व नहीं है इन द एंटायर इन्वेस्टिंग प्रोसेस। यहाँ आई जस्ट वुड लाइक टू क्विकली टेक यू थ्रू, हम लोगों ने कुछ महीनों पहले हमने ये स्टडी करी थी वेयर वी हैव लुक्ड एट मंथ ऑन मंथ डेटा ऑफ निफ्टी फॉर 23 years। और इट बेसिकली वी ट्राइड सीइंग कि अगर हमने हर महीने बेस्ट दिन में जाके इन्वेस्ट किया होता तो हमारी रिटर्न कितनी हुई होती। और दूसरा पोर्टफोलियो हमने क्रिएट किया जहां हमने हर महीने के वर्स्ट दिन पे जाके इन्वेस्ट किया तो हमारे रिटर्न कितने बनते 23 सालों में। और तीसरा क्या हमने एक ऑप्शन दिया था जहां पे हमने फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ जाके हमने अगर इन्वेस्ट किया होता तो हमारी रिटर्न कितनी बनी होती। ये थोड़ा सा डेटेड कैलकुलेशंस है लेकिन आई डोंट थिंक इट would have changed too much. So the results were like जो अगर बेस्ट डे में किया होता तो 14.3% केगर रिटर्न मिला होता 23 years में, वर्स्ट डे में किया होता तो 13.2%, और अगर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ में कर दिया होता तो 12.4% केगर रिटर्न। बहुत ज्यादा अगर आप देखें कि टाइमिंग में बहुत जाएंगे तो आप 14% बना सकते हैं, टाइमिंग आपकी बहुत खराब निकली तो आप शायद 13%, आपने टाइमिंग पे कोई ध्यान नहीं दिया तो भी आपका लगभग 13% रिटर्न बन जाएगा। तो रिटर्न के पर्सपेक्टिव से द पॉइंट आई एम मेकिंग कि आप बहुत ज्यादा टाइमिंग और इन सब में ना जाए, अगर आपके पास टाइम नहीं है एसआईपीस करें। I think Indian markets are giving you that opportunity where you can make 12-13% kind of returns in these markets. Thanks, Mayuri. The next question, again, I come back to you, Parvati. It's an interesting one when it comes to exiting a stock. When should one exit a stock? Yes, it's an interesting question because entry is still easy, but people are confused when it comes to हमको stock में से exit कब करना चाहिए. I mean, when should I possibly look at even booking profits? So there are a lot of multiple such questions that they receive. So यहाँ पे I will just highlight couple of points. पहला, अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स का या जो भी आपने स्टॉक से पोर्टफोलियो, सो द होल आइडिया इज एक स्टॉक में अगर आपको लगता है कि उस स्टॉक का फेयर वैल्यू अचीव हो गया है, देन दैट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस टू एग्जिट द स्टॉक। अगर स्टॉक मोमेंटम में है तो फेयर वैल्यू से कभी कभी 10-15% ज्यादा चल जाता है, बट इफ यू फील कंफर्टेबल कि नहीं मेरा जो लेवल्स था, मेरा फेयर वैल्यू था वो आ गया है, तो ऑन सजेशंस इट इज ओके टू नॉट वेट फॉर दैट मोमेंटम एंड काइंड ऑफ लुक टू बुक प्रॉफिट्स। इसी के लाइंस पे है कि अगर आपने प्रॉफिट बुक कर है या यू हैव क्लोज्ड योर इन्वेस्टमेंट गिवन द फेयर वैल्यूज अचीव, तो आप इसको बैंक में तो नहीं रखेंगे पैसा। सो व्हाट विल यू डू? यू विल इन्वेस्ट इन सम पैरेलल स्टॉक आइडिया। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कभी-कभी व्हेन वी बुक स्टॉक्स एंड इफ यू फील कि वहां 10-15% ही अपसाइड अवेलेबल है, बट एक पैरेलल आइडिया है जिसमें कि आपको 20-25% का अपसाइड दिख रहा है, देन यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स देयर एंड इन्वेस्ट इन दिस वन so that it can get a higher alpha return. So this could be your second reason for kind of looking to exit from a stock. योर थर्ड रीजन कुड बी आपका एकदम स्टॉक स्पेसिफिक रीजन हो सकता है कि कंपनी में कुछ ऐसे इवेंट्स हो गए हैं और बिकॉज ऑफ सर्टेन मैक्रो इवेंट्स द कंपनी इज नाउ सच अ वे इम्पैक्टेड कि द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स व्हिच वाज फोरकास्टेड एस्टिमेटेड फॉर द कंपनी या उसकी स्टोरी ही पूरी बदल गई है। तब वो एक कारण हो सकता है कि आप बोलें कि नहीं अब तो ये स्टॉक उतना अपसाइड नहीं देगा, डिलीवर नहीं करेगा, एंड देन यू काइंड ऑफ मूव आउट ऑफ इट। फ्रॉम अ स्टॉक स्पेसिफिक रीजन द फोर्थ रीजन वुड बी आपका मार्केट फैक्टर्स। सो कभी कभी एज एन ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे या गवर्नमेंट के पॉलिसीज के लेवल पे सर्टेन स्टॉक्स माइट नॉट डू वेल। सो लाइक रिसेंटली यू हैव सीन कि जो अभी इंटरेस्ट रेट बहुत चर्चा में हर जगह रहता है, पीपल आर टॉकिंग एवरी सेकंड डे अबाउट इट। सो हाउएवर इट हैज नेगेटिवली impacted some stocks, right, like real estate and all in between, because you could not see, because of the interest rates being very high, number of units did not go or it was not taken up, inventories were high. So what I'm trying to say, recently for companies during the COVID period or slightly उसके बाद जो
जिसकी exposure बहुत यूरोप में थी, which saw the energy crisis and other bits. Because of COVID, जब supply chain disrupt हुआ and people had these global supply chains. So what we are trying to see, अगर macroeconomic factors हैं जो आपकी industry को impact करते हैं, जिसमें आपकी presence है, and now you feel कि this will kind of continue or sustain for some time and limit the upside एक stock में, तो वो भी एक कारण हो सकता है to move out from the stock. I mean, apart from all this, last but the not least would be your liquidity. अगर आप देख रहे हैं कि आपको liquidity चाहिए for any personal reason, so that could also be one of the reasons to kind of move out from a stock and take an exit. Yes, Pooja. Thanks, Parvati, for that. It's true that yes, to capital GDP, what ratio is it and how significant it is when it comes for as an investor as well? The market cap to GDP ratio is also known as the Buffett indicator because Mr. Warren Buffett is the one who's credited to make it so famous. It basically is used to understand how overvalued or undervalued your markets are compared to the historical averages, basically. So generally, if you have to understand anywhere between below 75%, if a market cap to GDP is trending, then it is believed that the market's undervalued. Between 75 to 90% fairly valued, above 90%, it is considered as relatively overvalued. Here, the biggest thing is that these indicators work well for the economies where market cap is a reflection of the overall GDP composition, right? In a country like India, where still a significant portion is unorganized and is not in the formal, getting captured in the listed space. Representation is very low in the listed space. There, these kind of indicators, you have to balance it. You can use it as a crude indicator, but balance it with you look at it along with any other indicator, which will capture the quality of growth or the earning potential better. So point being that if your economy and the market cap is your listed space is reflecting the overall GDP composition, then definitely this indicator should be given a due emphasis. Otherwise, for probably for an economy like ours, you might like to club it with some other indicators and then look at it. Yes, Pooja. Thanks, Mayuri. Thanks, Mayuri, for that. Just for the participants, we are running a poll for the next 1 minute. We would like to hear from you in terms of your inputs, and then we'll take up the next question. The poll is live and it will be visible on your screens now. Moving to the next question, that's for Parvati. When it comes to the bear markets, what is the strategy that we use at RNR for a bear market? Okay, so as I said, markets generally move in cycles. So when you talk of a bear market or a bull market, the volatility which is there. So the whole idea is, how is your portfolio structured? Do we have some good growth and value stocks in the kind of contribution as per the risk appetite of an investor, so that a bear market, when we see, does not impact the downfall or limits the same? So the strategy here is to have a well-balanced portfolio as per an investor's risk appetite, which consists of both value stocks, which will help during a bear market, and during a bull market, you might have higher proportion of the growth stocks. So the percentage allocations kind of would be taken in those particular range, I would say, and that's the strategy we largely kind of follow. Thanks for that, Parvati. The next question is also for you. Which themes would lead the markets in 2023, or rather which sectors would give alpha returns in the next 2 years? Yeah. So which sector would lead? So here I'd like to answer slightly differently. So this is a heat map from the last 5 years, which actually mentions that no particular sector has consistently performed in the top 5 or bottom 5. And this was something that initially also, when I was trying to talk about model portfolio creation, I highlighted in the 10 years data,
कि निफ्टी से ऊपर 4-5 सेक्टर्स होते हैं और निफ्टी के नीचे 4-5 सेक्टर्स होते हैं. So like if you look at 22, निफ्टी ने 4% रिटर्न दिया, but PSU banks ने 71% दिया. And PSU banks have been on fire for the last 2 years that we have seen, where 21 में also they had delivered a 44% return, 22 में they are giving 21% returns. So what we are trying to say here is, while no particular sector will always remain the flavor in the market, it is important to be a part of such high momentum sectors where things are moving in favor of them. Could be macroeconomic factors, government support, and different. So if you look at it, like IT has been the biggest underperformer in 22 after almost 4 years of strong market run. So in line, what I'd like to say that currently not giving out any stocks, since under disclaimer we cannot give stocks. And ये एक आध query थी live where somebody was asking, like अमित जी का था कि 1 लाख में कौन से small cap नाम आप recommend करेंगे SIP जिसमें मुझे डालना चाहिए. तो हम stock specific नाम नहीं देते हैं. Under SEBI regulations we cannot give. Offline you could connect with our counselors who will help you with your portfolios, stock ideas and suggestion. Although at a high level, if I were to say कि आज की डेट में हम कौन सेक्टर्स हमें अच्छे लगते हैं, यहाँ हम कहाँ पे ओवरवेट हैं. So yes, BFSI, the financial services is one area where we are overweight and we like that sector, especially for all the macro factors which are driving in. Second is our consumption, primarily the consumer discretionary space जो हमें अच्छा लगता है. And third would be your building materials, your industrials and manufacturing space, which, as I was even pointing in the themes, was the PLI and the whole space that is where we like it. And if you look at it, all of this in the near term or the medium term is like BFSI, financial services बोल लीजिए, consumer discretionary बोल लीजिए, manufacturing, building materials की मैं जो बात कर रही थी, ये सारे बहुत India focused हैं. मतलब क्यों हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि given the current macroeconomic situations, the uncertainty, the recessionary trends that we are seeing in some of the global markets, what we are trying to say that companies which are inward, which are more domestic oriented और जिनकी growth इंडिया की consumption story से या growth से linked है, are likely to perform more better in the near to medium period, and that's where we are slightly overweight for now. Thanks, Parvati. I still have another question for you. IT shares have not been performing. What is the future outlook? When do we think that we will see a turnaround in this sector? Okay, yes. So while when we look at in the 1 year period, say Nifty ने अगर 6-7% रिटर्न दिया है, तो आपकी Nifty IT इंडेक्स ने अराउंड -17% रिटर्न दिया है. कुछ लोग बोलेंगे कि अभी कुछ रिलीफ रैली दिखी थी. So the current move that we saw, right, in the last few months that we were looking at was more from a temporary sector rotation जो investors करते हैं. So here what investors were doing was they were moving from the sectors which had performed well. जैसे IT ने एक कैलेंडर ईयर 2022 की बात करें तो 20 से 25% का डाउनफॉल देखा है, whereas banks have outperformed. So investors, as a part of their sectoral rotation, where they move from one sector, there are sectors which has actually outperformed, they move money from to the sectors which are slightly more now giving comforting valuation. So that was one relief rally or strong movement that we saw, some up move in the sector. Now coming from an outlook perspective, तो हमें IT सेक्टर का ये ध्यान देना होता है कि IT सेक्टर की जो डिमांड है, राइट, वो डिपेंड करता है मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस में. बेसिकली जो सिचुएशंस आपके यूएस और यूरोप में है, बिकॉज ये इंडियन आईटी कंपनीज के दो बड़े की मार्केट हैं. सो इनमें जो डिमांड है, राइट, उसके हिसाब से ही दिस कंपनीज ऑन दिस सेक्टर विल परफॉर्म स्लाइटली. सो टू सम एक्सटेंट इंडियन जो रैली अभी दिखी रिलीफ, अपार्ट फ्रॉम सेक्टोरल रोटेशन, वी ऑल्सो सॉ कि नैस्डैक में एक रिलीफ रैली दिखी थी बिकॉज ऑफ सम सॉफ्ट लैंडिंग एंड जो फेड का स्टांस होगा रेट हाइक को लेके, उसके वजह से भी थी. फ्रॉम अ मीडियम नियर टू मीडियम टर्म आउटलुक हम ये बोल रहे हैं कि अनसर्टेनिटी कहीं नहीं गई है. मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स, रिसेशनरी ट्रेंड्स विल बी देयर, व्हिच विल हैव सम इम्पैक्ट ऑन द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. सो अगर हम करंट कैलेंडर ईयर 23 की बात करें, सो इट हैज बीन स्लाइटली पॉजिटिव फ्रॉम द ये टेक्नोलॉजी बजट जो होते हैं कंपनी के, जहां पे एक शार्प रिवर्सल का expectation tha, so it has only been moderated. So that's a very good and positive sign from a longer term perspective. इसमें हमें ये समझना है कि
pre-COVID ही बहुत सारे companies जो IT sector में हम जो बात कर रहे हैं were already in their should I say technological upgrade curve पे थे, right? They had already started implementing. COVID saw this accelerated. पर जब एक company अपना टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन करता है, सो इट इज नॉट अ 1 year फिनोमेना, राइट? वो आपका कम से कम 4 से 5 साल का साइकिल होता है. सो इफ वी वर टू अज्यूम दैट पोस्ट कोविड ऑल्सो अगले 2-3 साल में दिस टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन विल कंटिन्यू. इट कुड बी एट अ स्लाइटली स्लो डाउन फेज, बट इट विल नॉट स्टॉप फॉर कंपनीज हैव ऑलरेडी अंडरटेकन इट. एंड दैट इज वेयर द कोर कंपोनेंट्स, एक आईटी सेक्टर का जो कोर कंपोनेंट्स ऑफ ग्रोथ होगा अगले कुछ साल के लिए, वो होगा आपका primarily data analytics, automation and cloud. So recently, right, from earnings call जो recent Q3 की हुई है to the management meetings जो हमने road show करी है इनके management के साथ, IT companies के management ये बोल रहे हैं कि presently globally only 30% of the companies have migrated to cloud. एंड उसमें भी ये इंपॉर्टेंट ये देखने की बात है कि जो ये 30% कंपनीज ने माइग्रेट किया है या स्टार्ट किया है, दे आर एट अ वेरी नेसेंट एंड दे आर एट एन अर्ली अडॉप्शन स्टेज. इसका मतलब ये है कि क्लाउड माइग्रेशन, राइट, आई मीन मूविंग टू क्लाउड एंड क्लाउड पेनिट्रेशन will be an important and integral growth driver of this sector for the next good few years. So yes, when we look at Indian IT companies, since 2015, they have already started taking this digital product adoption to be able to support this transition. जो global एक IT transition हो रहा है, to be able to be the partners to these companies, they have already started and they had prepared themselves. So slightly these are more resilient. As a sector, हमारी IT companies slightly resilient है and certain upheavals. So yes, near term में growth moderation रहेगा, which will be there in the next couple of quarters. However, on the upside जो benefit है ये है कि इनके operating margins expand करेंगे. ये इसलिए करेंगे क्योंकि जो pyramid effect आएगा, इन्होंने जो hiring कर रखी थी, जो वो अब rationalize कर रहे हैं, वो margin पे impact करेगा. Salary की rationalization हुई थी, जो कि एक बड़ा pain point था पिछले 3-4 quarter में, when we saw कि IT employees की salary just shot the sky, right? I mean, there was no left, right, center. So ये इनके लिए एक बड़ा cost था, जो कि अब rationalize हो गया है. INR devalue हो गया है, outsourcing बढ़ रही है. So all this will positively impact the IT sector and the margins. So while growth will be moderated for next couple of quarters, margins will expand. And I think that's how we should look at it. Longer term, 2-3 years, the structural stories remains and we remain positive. Thanks, Volatility. We are running out of time, but here's the last question that I have for Mayuri. If I have 25 lakhs to invest in a mutual fund, can I invest on your main portfolio for multi-bagger returns? If yes, how and how much? If I have to give a candidate answer, then yes, 100% should be in our advisory services. Jokes apart, I think it's always a good idea to diversify across products. So yes, a mutual fund, if you are just starting your journey, it is advisable that you keep large portion of your investments in mutual fund, and as you gain expertise and as you gain experience, probably then you start shifting this portfolio towards direct equities, because remember, direct equities, well managed direct equities product will definitely give you much higher returns than a mutual fund product. Having said that, there is no straight cut answer to this question. Typically by thumb rule is, you can use that age formula, which is 100 minus your age, to determine your asset allocation, which typically, if say you are 25 years of age, so 100 minus 25 is 75. So 75% of your allocation you should do towards equity products, which can again be divided between mutual funds and direct equity. But having said that, the decision you make has to be keeping in mind your risk appetite and your financial goals. So even if you're 25 years old, but you don't have that much of risk appetite, or your goals do not allow you to do that, then that is how you will balance and take a call at your end as to how to do the asset allocation. Thanks, Mayuri, for that. If in case we have happened to miss any of your questions, feel free to write back to us and we will try responding to those questions. Many thanks to all the participants for joining today's webinar. We wish you the best of health and wealth always. Thank you and have a great day ahead.
Thanks a lot to all the participants.